टू माय चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं सस्ता गेटिंग ओवर इट। हाँ, ये रियल वाला नहीं है। सो देख, मैं इसके बारे में बहुत सुना है। लोग ना अपना कीबोर्ड तोड़ देते हैं और माउस तोड़ देते हैं। क्या पता, मुझे तो लग रहा है मैं ना अपना घर ही तोड़ दूंगा। जितना गुस्सा मुझे आता है, पर आई एम इतना प्रो हूँ मैं कि प्रो के सामने भी मैं प्रो भी मेरे सामने फीके पड़ जाते हैं। सो न्यू गेम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सो ओ आ गया। तो वैसे ही है बिल्कुल, बस स्क्रैच पे बनाया गया है। आप पता नहीं, मैं भी स्क्रैच करता था पहले। स्क्रैच एडिशन। कट कट का फीलिंग। और मैं इतना प्रो हूँ ना, आप मेरी स्किल्स देख के मैं कितना प्रो हूँ मैं। ये देखो, ये There's no क्या है feeling more ये? intense than starting over. अरे क्या है ये? If you've broken your Scratch अरे वैसे ही बोल project रहा है। moments after you've shared it, as I have, अच्छा हुआ मैंने ऐसा उसमें or you देखा spent था, उसमें hours गन working on थी a जो project उसमें टिका only to हुआ था, notice वो नहीं too था। late that one of your बॉट था। sprites has ये भी हमने unexplainably करना gone रखना missing. पड़ा। एक If you've made use of that difficult to name thing of thing block So देखो, मैं within the बिल्कुल नहीं sensing करूँगा। category, amazingly I am useful pro. but capable due to a Scratch bug of leaving you crying as it dumps all your scripts in one big and ordered heap. If you've made real progress coding a game over the course of the ये week, देखो, only to come प्रोनेस back देख the रहे हो? next day to discover you weren't even logged in. Nothing has been saving. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day at school, ऐसा नहीं करूँगा। then what you're about to I am go pro. through may be too much. अरे क्या बोलता है? Feel free to go away and come back. अरे चुप हो जाओ। I'll be here. All right. Word. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you need to take a break at any point. Just find a safe place to stop and remember to pause the game by pressing P. शायद से। On Scratch, you can find loads of remixed or reimagined recreations of existing games. And with good reason. George Bernard Shaw said, "Imitation is not just the sincerest form of flattery, it's the sincerest form of learning." This game is a recreation of a game that came out in 2017 titled Getting Over It with Bennett Foddy. That game in turn was a homage to a free game that came out in 2002. Both games involved dragging yourself using a hammer up a mountain assembled from assets and objects sourced from many other games. It seems appropriate then that when trying to recreate Getting Over It in Scratch, that we should construct our mountain from the same assets used in literally millions of Scratch projects, the unmistakable contents of the Scratch costume library. Unlike Unity or Unreal, Scratch does not provide you with a built-in physics or 3D rendering engine. It has no state-of-the-art debugger. You can't even pause your scripts. We are forced to program old school. Our experience capped 30 frames per second on a 480 by 360 pixel stage. But these very restrictions force us to experiment, to think out of the box, to grow as developers as we become masters of all things Scratch. And let's not forget, what we lack in technology, we make up for in community. This fantastic bunch of budding software engineers, building, learning, creating, playing, remixing, as diverse a group of people as the very Scratch assets we now so skillfully attempt to ascend. 2 मिनट हो चुके हैं और मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ। The act of climbing, in the digital world or in the real world, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. When you start getting over it, you're standing next to a dead tree, which blocks the way to the entire rest of the game. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and strength, trying to find a way up. When starting a new Scratch project, that initial blank slate is both refreshing and at times a little scary. Wouldn't it be great if we could travel forward in time and review our finished projects to see how well they turned out? I certainly wish we could. The real draw of coding, what gives it that special zing, is the challenge of accomplishing something you've never done before. At this point, you don't want to fall into the trap of rushing into creating loads of content, designing all the levels, the player costumes, all the easier stuff that could be perfected later. No, before all that, you need to prod and poke that tree. That is, understanding the coding difficulties you're expecting to face and try out any ideas to solve them.
you may not be able to time travel. But at least this way you can get a good idea of how well your project is likely to go, and potentially save yourself a lot of time. तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पहले से खेल चुका हूँ, तो अब तुम सही सोच रहे हो, मैं पहले से खेल चुका हूँ इसको, और पूरा नहीं बच गया। मैंने पूरा नहीं खेला। अरे यार क्या है, अरे यार नहीं यार, Oh man, you lost a lot of progress. अरे यार हाँ, हाँ, यार क्या है? अरे यार स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैं 2 सेकंड में करके दिखाता हूँ। Whoops, oh dear. अरे यार बस ये वाला परेशान करता है बहुत। वो स्टार्टिंग वाला लेवल तो बहुत आसान था, ये वाला जो है ना, हो गया हो गया। Oh no, not again. यार क्या Pick yourself है? up, brush yourself off. Back up you go. मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, इतनी आगे पहुंच गया, मेरी प्रोनेस सारी। मेरा 10,000 साल का कोर्स सारा वेस्ट गया। यार मैं बता रहा हूँ, यार क्या हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अगर अब गिरा ना, मैं इस बिल्ली के कान पकड़ के और लंबे कर दूंगा। मुझे 2 सेकंड के लगा था, गया मैं। हाँ बच गया। इधर से कौन गिरेगा? ये कैसे करते थे? हाँ, गोल गोल रन, गोल गोल रन, सेमी सर्कल। हाँ निकल, आराम, बिल्कुल टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा। बच गया। इतनी आसान गेम।
इधर से गिरा था ऊपर से नहीं इधर पीछे से निकल गया ना वही कहा चलो फंस गया फंस गया इधर से गिरा था मैं फंस गया हाँ अब ये क्या है शायद से इसके बीच से निकलना होगा तो निकलेगा कैसा कोई Gosh, here we are again. ये कंप्लीट हो गया था क्या मेरा क्योंकि मैंने देखा कोई रास्ता नहीं था अरे जिस बंदे ने गेम बनाई है उसको मैसेज करना था क्या करूँ आगे क्या जगह ही नहीं क्या पीछे निकलूंगा मुर्गी के टांगों से कोई रास्ता नहीं है नीचे से निकल के देखो इधर कोई नीचे से कोई सीक्रेट रास्ता और इधर से ही है लग रहा था ओ भाई इसके आगे मैंने बिल्कुल नहीं खेला है मैंने सुना भी नहीं है This project began life a couple of months ago as 3 simple scripts: the player, hammer, and level. I spent no time on the art, just using ScratchGat and a few rectangles drawn in the sprite editor. The scripts for the player quickly mocked up in a similar fashion to those I teach on my YouTube channel. With the hammer, I had to improvise because I'd never done anything quite like that before. And boy, did I prod and hope at those scripts. अरे मैं फंस गया क्या करूं ओ निकला ऐसे किसके यार गिर गया हूँ मुझे लग ही रहा था सीक्रेट जगह से जैसे मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा था और कोई जगह लाई थी बुक्स जो थी ना सजा रखी थी भाई अच्छा वही बना रखा था भाई साहब मैं 11 मिनट से खेल रहा हूँ और कंप्लीट अब नहीं अच्छे से गिर जा होगा वजह यार चेक पॉइंट ले लेना चाहिए चेक पॉइंट की कुछ चीज होनी चाहिए इसमें It always seems impossible. Until, that is, it's done. Let's go. ये कंप्लीट हो रहा तो उसके ऊपर बैठ के चांग करके ऐसे करके
ये कंप्लीट हो गया। यार यार बुक्स क्या प्रैंक कर रख रखी है क्या? उल्लू बनाया बड़ा लाया वाला। ओ वाओ क्या? यार किससे बेच रहा? इधर गिरता हुआ। क्या? मैं इधर तक अटका होगा 4-5 घंटे बाद। हो बच गया, बच गया। आह, आह। बच गया, हो गया, हो गया। क्या कैसे कंप्लीट करूं? इधर से निकल रहे, ये नहीं बस बोलना कि इधर इधर अटका पड़ा है, इधर फिर उधर। और मुझे लग रहा है यही करना है। ओह शिट, क्या छेड़ा पड़ा है यार? टूट क्यों नहीं रहा हूँ? अच्छा कर बच गया। बहुत डर लग रहा है, अभी भी मैं सेफ नहीं हूँ करते हुए। मैं गिर सकता हूँ कभी भी। बच गया, हो गया, हो गया, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। टड़न टड़न टन टड़न टड़न टन। यार क्या? होय मगर मैं गिरा इधर से, मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मुझे समझ आ गया कैसे करना है इसको। ऐसे करके 1 2 3 गो। हाँ एनिमल What I had imagined and the results I was बोल लेते achieving पहले। were hard to reconcile. The hammer and the player sprites would get stuck in the walls and ground, ओ shake भाई and साहब jiggle and इसमें कैसे clip up to the top of the screen. Worst of all, when I tried the bread and butter action of lifting the player up upon the hammer. Any tiny movement would throw the player into a crazy up and down motion as if bouncing upon a possessed pogo stick. Things don't always turn out as you want them to, and sometimes it's good to take a break. So, for the time being, I shelved the project, letting it slowly slip down the list of unshared projects, joining the countless multitude of unfinished, unseen projects that haunt the vast storage archives of MIT. ये क्या है दिल? थैंक यू। ओ चेक पॉइंट तो नहीं, चेक पॉइंट है ये दिल, चेक पॉइंट होना चाहिए ना। अरे यार क्या है? मैं इंडिया बोल गया। हाँ चेक
था मुझे। चेक पॉइंट क्या करूं? चेक पॉइंट था। अरे क्या चेक पॉइंट था? नहीं था वो चेक पॉइंट। हाँ गिर गया यार। मैं छोड़ दूंगा यार। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना। मैं जा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। देखो बिल्ली भी बोल रही है, बिल्ली लाइक सब्सक्राइब भी करना। हाँ। तब तक के लिए बाय।